Morning all of you, welcome to your TSN English class. This is your second video on tenses. So in previous video we have read about some rules. Now let's begin with simple present tense interrogative sentences, or you can say question sentences. Form do or does, because question sentences हैं तो हम do और does से plus subject plus infinitive without to plus. When the subject is third person singular, we use does. तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डज. फॉर द सब्जेक्ट वी यूज़ डू. अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम डू यूज़ करेंगे. डू यू लर्न योर लेसन डेली? डज ही हेल्प्स द पुअर? डज शी नोज मी? वाई डज द गर्ल क्राई? सो हियर जो सिंगुलर पर्सन है थर्ड पर्सन उनके साथ हम डज यूज़ कर रहे हैं, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं या जो प्लूरल्स हैं फॉर दैट वी यूज़ डू हियर. सो फॉर अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस आई यू वी दे ही शी इट हम लाफ्स या लाफ यूज़ करेंगे. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस आई यू वी दे ही शी इट वी यूज़ डज नॉट लाफ. एंड फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस we use does, do, I, you, we, they, he, she, it, laugh. So this is negative sentences. Form subject plus do not, does not, the infinitive plus. Use does not if subject is third person singular. हम does not कब use करेंगे? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो. और डू कब यूज़ करेंगे? जब अदर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल हो. शी डज नॉट hate anyone. She is the singular. So we use does here, and because this is a negative sentence, we use not here. Next one, they do not welcome us. So they is a plural, that is why we use do. And here it is the negative sentence. What are the exceptions here? Never is followed by bare infinitive or infinitive, s or es, as in the statement. Negative is conveyed by never itself. That is why अगर हम never लगा रहे हैं तो there is no need, because it is already a negative sentence. So I never tease animals. She never tells a lie. So there is no need to write here when the negative sentence is conveyed by never itself. नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस जब हमें नेगेटिव प्लस क्वेश्चन फॉर्म दोनों यूज़ करने हो, देन वी यूज़ फॉर्म डू नॉट, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट द इन्फिनेटिव. एग्जाम्पल्स: डू नॉट लाइक दिस न्यू, डोंट यू लाइक दिस न्यू फिल्म, question mark. Does not or doesn't she help the poor with money? So these are the negative sentence when we use do with plural, or you or I, or does with singulars. Emphatic use of do and does. Form subject plus do does the infinitive. Examples: she does drink but not in public. I do go to the gym but but only on Sundays. So these are basically some examples with how you can use emphatically do or does. Important note: use only the first form of verb after do and does. Do and does में हमें first form of verb ही use करना है. Adverbs: the simple present tense is used with the words always, often, frequently, generally, usually, sometimes, every day, every week, every month, daily, once a week, twice a week, etc. So हम इनके साथ simple present tense ही use करेंगे. The use of simple present tense to express the habitual actions. I go to the temple daily. She always speaks the truth. My grandmother tells us a story every evening. These are some habitual actions. जैसे टेम्पल हम डेली जाते हैं, सच बोलना. ग्रैंड मदर जो है स्टोरी सुनाती हैं एवरी इवनिंग. फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं.
Or to express it, the earth moves around the sun. The earth revolves around the sun. You can say also it. The sun rises in the east. Water freezes into ice at 0 degrees Celsius. To express a situation or in fact that is the permanent as, और ऐसे सिचुएशन जो या जो परमानेंट सिचुएशंस हैं फॉर दैट और फॉर फैक्ट्स. द ताज स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना. माई हाउस फेसेस नॉर्थ. तो आप देख सकते हैं वर्ब्स में ही एस का यूज़ किया गया है. दिस रोड्स लीड्स टू अम्बाला. तो लीड्स इज अ वर्ब, तो लीड्स के साथ एस यूज है. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मस्ट हैपन इन द नियर फ्यूचर एज. ऐसा एक्शन, a future action that has a fixed schedule. For that we use the simple present tense. Her marriage comes off next month. Ravi goes to England next year. We leave at 7 a.m. tomorrow. So these are the fixed schedule actions. Next, to read or write subordinate clause of time or condition when the main clause refer to the future. So, if you come, we shall be happy. If you work hard, you will pass. We will not wait here until he comes. He will come out when the bell rings. So, these are some subordinate clause examples. So, here, basically, simple present tense, it contains some habitual action, some general truths, a future action that has a fixed schedule, a permanent situation, or some feelings or thought you can use. So, for simple present tense, S or ES, do and does for interrogative sentences, and for negative sentences you can use do not or does not. So basically this is your simple present tense.